So now we have to discuss about the colloids. As far as colloids are concerned, we know very well that in the impure substances category, we are having two type of mixtures, homogeneous mixtures and heterogeneous mixtures. In the heterogeneous mixtures, we are having colloids and suspension. So actually the particle size of the colloid is in between of the suspension and the true solution, right? And this ranges between 1 nanometer to 1000 nanometer, that is 10 to the power 9 minus 9 to 10 to the power minus 6 meter. Please take care, the particle size of colloids is very important and very concerning when we are studying the surface chemistry. On the other hand, we are having just an example is given here to explain you how immensely the surface area can be increased if a particular substance is converted into the colloids. Suppose we are having a cube of side 1 centimeter, that is its volume is 1 centimeter cube, and its total surface area is 6 centimeters square. But at the same time, if we break it into the 10 to the power 12 cubes of equal sizes, which will be approximately in the range of colloidal particle, right? So you cannot believe that the surface area will be increased by 1000 times from 10,000 times from 6 centimeters square to it will become now 60,000 centimeters square, right? That is 6 meters square. This enormous surface area leads to various properties which we have to discuss in the colloids. As far as colloids are concerned, right, we have to classify them, and to classify any substance we are having different criteria. For example, colloids can be classified on the basis of the following criteria. The first can be the physical state of dispersed phase and dispersion medium. Yesterday I have already told you that in the solution, for example, we were having the terms solute and solvent. So in this colloid, we are having the terms dispersed phase and dispersion medium for the substance present in mass and more amount and in the less amount. So the physical state of dispersed phase and dispersion medium is the first criteria on the basis of which we can classify the colloids. Second, we are having nature of interaction between dispersed phase and dispersion medium, how they are interacting with one another. And third is the type of particle of the dispersed phase. Sorry. Now let me continue with the classification. Here, the classification is based on the physical state of the dispersed phase and dispersion medium. You can see beta two gases, that is if gas and gas is the dispersed phase and only gas is the dispersion medium, then we cannot form any colloid. So one combination means one side we are having solid liquid gas, on the other side we are having solid liquid gas. Total of the 9 combinations are possible if we are having the two, right, in at one time. But gas and gas is eliminated, so total we are having 8 possibilities. What? Dispersed phase is solid, dispersion medium is solid, dispersed phase is solid, dispersion medium is liquid, and dispersed phase is solid, dispersion medium is gas. When we are having solid solid, we can say it is a solid sol. Solid and liquid combination in the liquid dispersion medium. When solids are distributed, it is called sol. For example, paint and sulfates. इसके ऊपर के example में glasses और gemstones थे. Then we are having solid and gas combination. For example, aerosol, smoke, dust. Yeah, these are called aerosols. Liquid and solid. This is called a gel. When liquid is involved in the solid, means a liquid is dispersed in the solid dispersion medium. Then gel is found, for example, cheese, butter, jellies. Liquid, this is called emulsion. For example, milk, hair cream. Liquid and gas combinations means liquid is dispersed in the gaseous dispersion medium. Once again, it is called aerosol. Please take care. Liquid plus solid plus gas was also aerosol. Liquid plus gas is also aerosol. And in this combination, in this case, we can say it is fog, mist, cloud, insecticide sprays, etc. Yeah.
Further, we are having gas and solid. Initially, you can see where you are having solid and solid. Then it was called solid sol. If you are having gas and solid, then it is called solid sol. Only if you are having liquid and solid, then it is called gel. Okay. So solid sol, pumice stone, foam rubber, etc. Gas in liquid phase means gaseous dispersed phase in the liquid dispersion medium. Foam is found, for example, froth, whipped cream, and soap lather. Yeah, these are the few examples of the 8 different possible combinations of the colloids in which dispersed phase and dispersion medium in various phases are taken, various physical states are taken. Now let me move to the second criteria of classification on the basis of which we have classified. This is for a simple reading, you people can go through. Let me go through for you, right? But a quick reading will be there. Many family or commercial products and natural objects are colloids. For example, whipped cream is a foam, which is a gas dispersed in a liquid. Firefighting foam used as an emergency airplane landings are also colloidal systems. Most biological fluids are aquasols, solids dispersed in water. Within a typical cell, protein, nucleic acids are colloidal particles in size, right? जो हमारे macromolecules हैं, these are means equivalent to the colloidal range size of the particle. Yeah, dispersed in an aqueous solution of ions and small molecules. Out of the various types of colloid given the table 5.4, the most common are salts. Please take care. Solid and liquid, gels, liquid and solid, and emulsions, liquid and liquids. However, in the present unit, we shall discuss only about the sol and emulsion. अभी आगे जाकर के हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो only sol will be there and emulsion will be there. All right. Now, further, it may be mentioned that if the dispersion medium is water, अगर dispersion medium water है, the sol is can also be termed as aquazole या फिर hydrozole. ठीक है? Please take care. अगर water में आपने sol बनाया है, dispersion medium water है, तो you can form aquazole or hydrozole. If the dispersion medium is alcohol, it is called alcohol and so on. Classification based on nature of interaction between dispersed phase and dispersion medium. बेटा अभी तक हमने जो क्लासिफिकेशन देखा, राइट, वो था कि डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल और डिस्पर्जन मीडियम का फिजिकल स्टेट क्या था, राइट. नाउ वी विल सी द क्लासिफिकेशन on the basis of interaction between the particles of dispersed phase and dispersion medium, and on this basis, let's see, we can have two type of salts, lyophobic and colloids, lyophobic and lyophilic, right. Lyo means होता है solvent, so lyophilic यानी solvent loving, solvent attracting, and lyophobic means solvent repelling. Okay. So depending upon the nature of the interaction between the dispersed phase and dispersion medium, colloids are classified into two categories, lyophilic and lyophobic. If water is dispersion medium, the terms used are hydrophilic and hydrophobic. Water के केस में आप lyo की जगह hydro term use कर सकते हैं. Lyophilic colloids. The word lyophilic means liquid loving. Okay. Colloidal salt directly found by mixing substances like gum, gelatin, starch, rubber, etc. with a suitable liquid, that is dispersion medium, are called lyophilic salts. बेटा अगर आपने डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल्स जिस भी सॉल्वेंट में घोले हैं उस सॉल्वेंट के साथ उनका अट्रैक्टिव इंटरैक्शन है, then we'll term the salt as lyophilic salt. An important characteristic of these salt is that if the dispersion medium is separated from the dispersed phase by evaporation, the salt can be reconstituted by simply remixing with the dispersion medium. इन salts के बारे में सबसे गजब बात क्या है
कि आप एक बार अगर मान लीजिए आपने स्टार्च का वाटर के साथ सॉल्व बनाया और फिर वाटर इवेपोरेशन की वजह से उड़ गया, तो आप दोबारा पानी ऐड करके सॉल्व मेंटेन कर सकते हैं, कोलाइड मेंटेन कर सकते हैं। बट आगे हम लोग देखेंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छा, क्योंकि ये आसानी से बन रहे हैं दोबारा से, या फिर हम दोबारा से इनके कंपोनेंट अलग कर सकते हैं, तो these are called reversible salts. Okay, furthermore these salts are quite stable and cannot be easily coagulated as discussed later. इनका coagulation बहुत आसानी से नहीं होता है. Okay, now let me move on. Lyophobic colloids. Lyophobic colloids, the term lyophobic means liquid hating. ऊपर क्या था? Liquid loving. यानी यहाँ पर for example we are having substances like metals, unke sulfides etc. when simply mixed with dispersion medium do not form the colloidal salt. Their colloidal salt can be prepared only by special methods. अभी वो methods हम लोग आगे discuss करेंगे. Such salts are called lyophobic salts. These salts are readily precipitated, बहुत आसानी से precipitate कर जाते हैं, coagulate कर जाते हैं, and adding to small amounts of electrolyte or on addition of the small amount of electrolyte by heating or by shaking here and here, hence are not stable. इनमें आप हल्का सा electrolyte ऐड करके या फिर इनको जस्ट शेक करके आप सेपरेट कर सकते हैं, कोगुलेट कर सकते हैं, और इस वजह से हम कहेंगे कि these are not stable, right? और वापस से सिर्फ पानी मिला करके आप दोबारा इनको मेंटेन नहीं कर सकते. Once precipitated, they do not give back the colloidal solution simply by addition of the dispersion medium. सिर्फ dispersion medium दोबारा से ऐड करके बेटा you cannot get the salt again. That's why these are called irreversible salts. Lyophobic salts need stabilizing agent. इनको क्योंकि ये स्टेबल होते नहीं है, तो इनको सॉल्ट की पोजीशन में मेंटेन रखने के लिए कुछ स्टेबलाइजिंग एजेंट्स की जरूरत पड़ती है हमें. ऑलराइट, तभी ये स्टेबल हो पाते हैं. नाउ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द पार्टिकल टाइप ऑफ पार्टिकल ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम. अच्छा, टाइप ऑफ पार्टिकल कैसा हो सकता है? इसके आधार पर मल्टीमोलिक्यूलर कोलाइड हो सकते हैं, या फिर मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड हो सकते हैं, या फिर एसोसिएटेड कोलाइड हो सकते हैं. नाउ लेट्स सी. लेट मी गेट द फीडबैक ऑफ स्टूडेंट्स. बेटा आप लोगों को समझ में आ रहा है इतना आसानी से? कशिश, अंकिता, so let's continue with the students with this classification on the basis of type of particle of the dispersed phase, right? इसके आधार पर देखिए 3 कैटेगरी हो सकती हैं. डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल, देखिए डिस्पर्स्ड फेज का पार्टिकल अगर कोलाइड है, इसका मतलब वो कोलाइडल पार्टिकल रेंज में है, पार्टिकल साइज रेंज में है. अब बात आती है कि क्या वो बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर के उतना बड़ा मॉलिक्यूल बनाया, दैट इज मल्टीमोलिक्यूलर टाइप का है. ऑन डिसोल्यूशन अ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस एग्रीगेट टुगेदर. उनमें एग्रीगेशन हो रहा है, वो आपस में छोटे छोटे थे, एक्चुअल में छोटे मॉलिक्यूल्स थे, मगर वो मिलकर के बड़े मॉलिक्यूल बन गए हैं, एग्रीगेशन हो गया है. To form species having size of the colloidal range that is diameter above 1 nanometer. The species thus formed are called multimolecular colloids. ऐसे molecules को बेटा multimolecular molecules बोलते हैं, और उनसे बने हुए colloid को multimolecular colloid. For example, a gold salt may contain particles of various sizes having many atoms. Sulfur salt consists of particles containing 1,000 or more of acid sulfur molecules. बहुत सारे सल्फर मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर के सल्फर सॉल्ट बनाते हैं. गोल्ड सॉल्ट में गोल्ड के एटम्स आपस में कंबाइन रहते हैं, राइट? तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बोलेंगे, ऐसे सॉल्ट को बोलेंगे, ऐसे कोलाइड्स को बोलेंगे मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स. नाउ वी आर हैविंग macromolecular colloids. So macromolecular colloids, macromolecules in suitable solvent. ये मैक्रोमोलिक्यूल जो बड़े मॉलिक्यूल पहले से होते हैं, ऑलरेडी बड़े हैं, ठीक है.
बायोमोलिक्यूल्स में इनके बारे में हम ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। सॉल्वेंट फॉर्म solutions in which the size of the macromolecules may be in the solution range, colloidal range. Such systems are called macromolecular colloids. These colloids are quite stable and resemble true solution in many respects. Examples of naturally occurring macromolecules are starch, cellulose, protein, and enzymes. Those of man-made macromolecules are polythene, nylon, polystyrene, synthetic rubber, etc. ठीक है। नेक्स्ट इज एसोसिएटेड कोलाइड या फिर मिसल्स। मैक्रोमोलिक्यूल तो समझ में आ गया होगा बेटा। मिसल्स की बात कर लेते हैं। These are some substances which at low concentration behave as normal strong electrolytes. ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं एसोसिएटेड कोलाइड्स, राइट, जिनसे मिसल, जैसे क्लास 10 में हमने आपको मिसल फॉर्मेशन बताया था सोप के मॉलिक्यूल का, ओके। बट एट हायर कंसंट्रेशन एग्जिबिट कोलाइडल बिहेवियर। लो कंसंट्रेशन में ये कैसे रहते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसा काम करते हैं, मगर जब इनका कंसंट्रेशन हाई हो जाता है तो ये एग्जिबिट करते हैं कोलाइडल बिहेवियर, क्योंकि इनमें एसोसिएशन हो जाता है। द एग्रीगेट ऑफ पार्टिकल्स thus formed are called micelles and these are known as associated colloids. The formation of micelle takes place at above only a particular temperature, that is called Kraft temperature. Kraft temperature के नीचे अगर आप काम कर रहे हैं तो मिसल फॉर्मेशन नहीं होगा। एंड एट द सेम टाइम बेटा ध्यान रखिएगा, CMC क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन, इस मैंने कहा ना कि लो कंसंट्रेशन पे ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सिर्फ स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन पे मिसल बनाते हैं, हाई कंसंट्रेशन में मिसल बनाते हैं। तो लो और हाई तो बड़े कंपैरेटिव टर्म्स हैं, ओके। एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन होगा जिसके ऊपर जाने पर ही वो पर्टिकुलर टाइप का कोलाइड या पर्टिकुलर टाइप के मॉलिक्यूल्स कोलाइड फॉर्मेशन करते होंगे, मिसल फॉर्मेशन करते होंगे, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। दिस इज द concentration above which a particular substance starts formation of the micelle, okay. Please take care, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, TK that is Kraft temperature and CMC critical micelle concentration. On dilution these colloids revert back to individual ion, है ना। अगर आप एक बार मिसल फॉर्मेशन हो जाए फिर आप पानी बढ़ा दें, यानी फिर आपने कंसंट्रेशन गिरा दिया, CMC के नीचे कंसंट्रेशन आ गया, तो वापस से ये नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल हमारे पास सरफेस एक्टिव एजेंट जैसे सोप और डिटर्जेंट होता है, ओके। इस क्लास में हम लोग सोप फॉर्मेशन के, सोप के थ्रू CMC पढ़ेंगे। सोप के लिए CMC 10⁻⁴ 10⁻³ मोल पर लीटर है। These colloids have both lyophilic and lyophilic parts. सोप में आपको पता है कि lyophilic and lyophilic दोनों पार्ट होते हैं, ओके। And micelles may contain as many as 100 molecules or more. तो 100 या उससे ज्यादा मॉलिक्यूल्स भी कंबाइन होकर के मिसल फॉर्मेशन कर सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ मिसल फॉर्मेशन, ये मुझे लगता है आप लोगों को खुद से एक बार स्टडी करना चाहिए, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम डिफरेंट मेथड्स के थ्रू कोलाइड कैसे बनाए जाते हैं इस पे स्टडी करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा अगली क्लास टेक्निकल होने वाली है, इसलिए जाग करके बैठिएगा, ओके। एंड एक रीडिंग अगर आप पहले से करके रखेंगे तो आपको ही मजा आएगी, मुझे मजा आएगी क्लास लेने में। फाइन, थैंक यू क्लास, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड ऑल द बेस्ट। ऑलराइट।